శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
అలాగా కళ్యాణోత్సవం కానీ పేరు నమోదు చేయించిన గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్న గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద 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 అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచరే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సిందే. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో வெங்கடேஷாய. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்க கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பை நாம் இந்த திரையின் வழியே தரிசித்துக் கொண்டுள்ளோம். ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுடைய கல்யாண மகோத்சவத்தை தான் இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். வைகானச ஆகம விதிமுறைப்படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த திரு கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாக உள்ளது. திருமலையில் நின்ற திருமாலே, நாடியவர்க்கெல்லாம் வேண்டிய நல்விடும் திருவேங்கடவா, உமது அடிபணிந்து வினைவியை வேண்டினேன் வேத முதல்வா, உலகம் உண்ட திருவாயா, ஊரு கலைந்து ஆட்கொள்ள என்னை நீயே என்று நமது மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். சர்வம் விஷ்ணுமய ஜகத் என்கிற மூதுரைப்படி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு அர்ச்சை ரூபமாய் திருமலையில் சேவை சாதிக்கும் திருவெங்கடமுடையான். ஆகவே இது சர்வம் வெங்கடேஷமய ஜகத், அந்த கலியுகம் தெய்வமான திருவெங்கடமுடையானின் உற்சவ மூர்த்தியானைய உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார்களோடு நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து எம்பெருமானின் திருவருளை பெறுவதற்கு
காண்பதற்கு பக்தர்களை அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். பக்தர்களே, திருக்கல்யாண ஆரம்பத்தில் முதலில் சங்கல்ப பூஜை நடைபெற்றது. அடுத்த கைங்கரியத்தை இதோ இந்த திரையின் வழியே தரிசிக்க உள்ளோம். விக்னம் நிக்னந்த் சதம் சக்ஸேனந்தமாஸ்ரீ ஸ்ரோதஸ்மார்த்தாதிகம் கர்ம நிகலம் என சூத்திரம் தஸ்மை சமஸ்த வேதார்த்த விதே விகனசே நமः. பிரதிஸ்வருதிரதே பூர்ணம் சாஸ்திரகல்லோல சங்குலம் விஷ்ணு பக்ததகம் சுத்தம் வந்தே ஸ்ரீகுணோர்ணமம். பிராணாநாயம்யா ஓம் பூः ஓம் புவः ஓம் ஸ்வஹ ஓம் மஹ ஓம் ஜனஹ ஓம் தபः ஓம் சத்யம் ஓம் தத்சோதர்வரேண்யம் भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवो मा भोज्योतिरसां तं ब्रह्म भोर्भवस्वरम् अस्यां शूदौ सदेवस्य वदो नारायणस्य श्रीपदेवोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवमाङ्गं तण्डिलपरिपरिसना सर्ववृत्तन्त्रभुषिद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मकरिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन प्रसाप्यर्थं विचक्षणाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये. ओम धारा सप्तश्रमान् शेषु सरस्वरूपेषु अपोविरण्हन् परिपादयिष्ये घृणां दत्तागं सुचरगं शर्म इदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा शुभा शुद्धमा पोता पोतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमां तां दृशाः पोता ब्रह्मपवित्रेण पुता सूर्यसरस्मै आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशुवापो नमापो सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजविश्वापः सत्यमापः सर्वा देवतापो भूर्भवस्वरापोम अस्मिन् कुम्भेङ्गातिरथनावाहयामि यथेषदम्बरणे सहस्रं ज्ञाः पाठाविदाः पुत्र तेभ्यो निन्द्रस्वताद् विष्णुरिष्टे देवामुञ्चन्तमतः स्वस्य वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः. वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्रोतस्त्रोत्र्याभरण उपवेदपुष्पगन्धदोपरिपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं भावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्धवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणसकर्माणि निर्घ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये. विश्वक्षेणं चतुर्बाहुं शङ्करचक्रसंहितं व्याप्तिं सङ्केतं सुस्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवन्देवं दक्षिणाङ्कमच्चेत् आग्नेयस्माद्दामहेत्वाश्वेदात्तं हेतोत्सम्भवः वैराजन्ते सुतनिदत्तां प्रेषां दिशोपदानामनादि यामे सान्दन्दान् दातुं भूः पद्माकरुणे. विश्वक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अविदमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रदीमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्पत्नी विश्वक्षेणस्येदमासनं. विश्वक्षेणाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. विश्वक्षेण स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यमुपासिता कर्मणान् विघ्नान्ते आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य कुर्यात् सुर्वारस्य विश्वक्षेणस्य पूजनं भगवद्प्रज्ञातः पुण्यं वाचयिष्ये. ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतमस्तु. प्रजापतिप्रीतां प्रीतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेयः शुभान् वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेयः शुभान् वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि. ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामि इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानदेवतं समूढवस्य वागुंसरे त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ये विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः वृतानि वसुसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरा ददौ तद्विप्रासो वन्यवाजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तरश्च द्रविणोदा सरस्य प्रगंसते द्रविणोदा वीरविदेशन्नो द्रविणोधाराः स्थितिर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्करुविदपविषं यदा वै सूर्योदयति तदनक्षत्रन्नेति यावत् तत् सूर्यो गच्छेति अत्यधिहन्यं पश्येति तावत् कृतत्कारी स्यात् पुण्याः यवकृते. ओं भूः अतिपुरोक्त एवं गुणविशेषविष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सन्निधपरिवेशना सर्वोत्तन्त्रं शान्तं स पुण्यावाचकर्मणि पुण्यां भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु. स्वस्तिनेन्द्रस्वस्तिनः पूषाश्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्षरिष्ठेमिः स्ना बृहस्पतिः ददातु. ओं भूः अतिपुरोक्तविष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्त्रं शान्तं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति. रुद्ध्यासहव्येनं संसुद्ध्यां तिरदेवं तिरधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवं सदस्वीराः.
ఓం భూహతివృష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం స్థండిలపరివేశనా సర్వోత్తంత్రం శాంతత్వం సపుణ్యావాచర్మణి వృద్ధిం భ్రంతో కర్మరుద్ధదాం కర్మ వృద్ధిం భ్రంతో కర్మరుద్ధదాం కర్మ వృద్ధిం భ్రంతో కర్మరుద్ధదాం వృద్ధి సమృద్ధి పుణ్యా సమృద్ధి ఆపోహిష్టామయోభోస్థానం ఊర్జితాదన మెహేరణాయ చక్షే యోపస్ఫుతమార్ధస్తస్వార్యదేన ఉషతిరివ మాత్రః తస్మారంగమాభో శిక్షయా జన్మధ ఆపోజనేధాజనः హిరణ్యవర్ణాశ్చ పావకాయాశ్చాతः కస్యభోజా సుందరः అగ్నియా గర్భం దద్రేవరూపాస్థానాపసగ్గుస్వానాభవంతు పవమానస్వర్జునः పవిత్రేణ విచర్షిణిः యః పోతా సపునాతమా పునంతమాదేవ జనాः పునంతమనవాధియా పునంత విశ్వాయవः జాతవేదः పవిత్రవతి పవిత్రేణ పునాహిమ అగ్నే క్రత్వా కృతగుమ్రణు येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुण्यदेवताः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्मविदाभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नेते सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरणसमीक्षाः यमोराजाः प्रमणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञमदये दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभीषणं शन्नो अस्तु द्विपदेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यान्ति देवार्तिरामार्जयन्तां दक्षिणायान्ति स्मासाः पुत्रामार्जयन्तां प्रदीक्षान्ति शिग्रहाः पशुवामार्जयन्तां उदीहीच्चान्तिश्चामोषधयो वनस्पतिमार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाः यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामुदाधराधरे नागेभ्यमार्जयन्ताम् वास्तवस्पदे प्रजाने स्वान् स्वावीशो नमिवो भवानः यत्ते महे प्रजन्नो षष्ठने दद्पदे शञ्चतुष्पदे वास्तवस्पदे शिग्मया संसदाते सक्षेमयि शरण्या गातमत्याः आवक्षेमुतया गीवृण्णो यूयं पातस्तस्यभिस्वदानः अमीवः वास्तवस्पदे विश्वारूपाण्याभिषण् तथा सेवयेधिनः अनोरणीयान् महत्वमहीयानात्मा गुहायानीतोऽस्यन्तोः समस्कृतं वत्सवीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन् सप्ताः सप्तार्चः समितः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त अतः समुद्रागिर्यत् सर्वे छान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाश्च सेनेशभूता तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवी कवीनां ऋषर्विप्राणां महिषो मृगाणां सेनो गृध्रानागस्वैतर्वणानागस्वमः पवित्रमत्ये तिरेपन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रजां जनयन्ति गुंसरूपां वरुणान्मा सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचुं सर्पयामि वरुणान्मा सक्सेना यथा भासा गुडाभारन्निवेदयां ताम्बूलं सर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన வெங்கடேஷோ சமோ தேவோ நபுதோ ந பவிஷ்யதி என்பதற்கேற்ப ஏழுமலையானுக்கு நிகரானதும் வேறு ஒன்றும் இல்லை, இந்த உலகிலே இல்லை, இனிமேலும் இருக்கப் போவதும் இல்லை என்பதுதான் பொருள். எந்த ஒரு மங்கள காரியம் செய்வதற்கு முன்பும் சரி, முதலில் ஆச்சாரியத்துடன் படி கடவுளை வணங்கிவிட்டுத்தான் மற்ற காரியங்கள் செய்வார்கள். அதே போல் இங்கும் கூட முதலில் விஸ்வக்சேனரை ஆராதனை செய்த பின்னரே எந்த ஒரு காரியங்களையும் செய்ய வேண்டுமாம். ஆனந்த நிலையஹா ஸ்ரீமன் கல்யாணம் குணசாகரஹா பக்த பிரியோ ஜகநாதஹா ஸ்ரீனிவாஸ்துமே என்று அந்த பகவானை இதோ அங்குரார்ப்பணம் வேளையிலே சேவிக்க இருக்கிறோம். திருமுலை சாற்றுதல் என்கிற அங்குரார்ப்பணம் என்பது தேவர்களை ஆவாகனம் செய்வது. அதாவது மண் பாலிகையிலே நவ தானியங்களை இட்டு அதிலே திருத்துளாய் சேர்த்து அஷ்டதிக் பாலகரையும் தேவர்களையும் இந்த கல்யாண உற்சவத்திற்காக வரவேற்பு கொடுக்கிறார்கள். அதுதான் அங்குரார்ப்பணம் என்னும் திருமுலை சாற்றுதல் என்பது. மலையப்ப சுவாமிக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் இந்த கல்யாண உற்சவத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த மண் பாலிகையிலே இடும் நவதானியங்களானது திருமுலைகளை, அதாவது முளைவிட்டு பயிராக வளரும், அப்படி
திருமண வாழ்க்கை கூட வசந்தமாக ஆனந்தமாக இருக்கும் என்ற அந்த ஆனந்த நிலையின் வாசனின் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை தான் நாம் இப்பொழுது சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு மூலமாக பகவானை நாம் சேவித்தால் நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் தொலைந்து நீக்கப்பட்டு புனிதமாகி விடுவோம். திருத்துழாய் என்றாலே அந்த ஆண்டாளுக்கு பிரியம். ஏன் தெரியுமா? அவள் அந்த வனத்திலேயே கண்டெடுக்கப்பட்டவள். அந்த துளசி வனத்தில் அருகிலே, அதாவது அப்படிப்பட்ட திருத்துழாய்க்கு புஷ்பங்களுக்கும் இல்லாத சிறப்புண்டாம். புஷ்பங்களுக்கு கூட இருக்கிறது. ஆனால் அந்த திருத்துழாய் மூலம் ஆண்டாள் அந்த பகவானையே சேர்ந்து விட்டாள். அப்படிப்பட்ட ஆண்டாளின் சேவிக்கும் பகவான் நமது திருவேங்கடமுடையான் திருக்கல்யாண உற்சவத்திலே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷா பூஜையை ஆரம்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ரக்ஷா பூஜை என்பது எம்பெருமானுக்கும் நாச்சிமார்களும் கரங்களிலே கட்டப்படும் நாகாபரணம் கயிறு என்று கூறுவார்கள். அந்த ரக்ஷைக்கு முறையே பூஜை தொடங்க உள்ளது. இப்பொழுது இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி தொடங்குகிறார்கள். அதை நாம் இப்போது சேவிக்கலாம். ஆனந்த நிலை வாசனே திருவேங்கடமுடையானே கோவிந்தா கோவிந்தா, சப்தகிரி வாசனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இந்த நன்னாளிலே மலையப்ப சுவாமியை சேவித்து இரு கரங்களை கூப்புவோம். பக்தர்களே, இதோ ரக்ஷா பூஜையை செய்து கொண்டுள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த ரக்ஷையில் நாகராஜனையை ஆவாகனம் செய்து அந்த மந்திரச்சாட்சியை பகவானுக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासोः वन्दनः विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरोपसरग्निः स्वस्तेः देवाः मन्त्रिभः स्वस्तेः स्वस्तिनोः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्यैरेवति स्वस्ति नीन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्तिनोः यदे कृधि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्तार्क्षमरिष्ठनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नाभं वारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयञ्च स्वस्त्याः त्रयं मनसाताक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्वं बाधे शुभयन्नोऽस्तु शुभगुं शुभम्. ஏழுகொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி ரக்ஷா பூஜையை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். இதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷா பந்தனம், அதாவது காப்பு கட்டுதல் என்கிற கைங்கரியத்தை தான் இப்பொழுது நாம் செவிக்க உள்ளோம். அந்த மந்திரச்ச ரக்ஷையை முதலில் பகவானுக்கு முறைப்படி பூஜை செய்து பின்பு அவரது திருக்கரத்திலே சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. சென்றால் குடையாம், இருந்தால் சிங்காசனமாம், நின்றால் மரவடியாம் நீழ்கடல் என்றும் புனையாம் அணி விளக்காம், பூம்பட்டாம் புழுகும் அணையாம் திருமார் கரவு என்று பொய்கை ஆழ்வாரினுடைய இது திவ்ய பிரபந்தம். அதாவது திருமால் எங்கு நடந்து சென்றாலும் ஆதிசேஷன் அவருக்கு குடையாகிறார். திருமால் அமரும் பொழுதெல்லாம் ஆதிசேஷன் அவருக்கு சிம்மாசனம் ஆகிறார். திருமால் நிற்கும் பொழுதெல்லாம் ஆதிசேஷன் அவருக்கு காலணி ஆகிறாராம். திருமால் படுக்கும் பொழுது ஆதிசேஷன் நீண்ட படுக்கையாகவும் பூம்பட்டாகவும் மணி விளக்காகவும் தழுவிக்கொள்ளும் தலையணையாகவும் ஆகிறார். அப்படி முன்பே ஆதிசேஷனின் பிறப்பும் அவர் பகவானிடம் கொண்ட பக்தியும் அறிந்தோம். இப்பொழுது அவர் பகவான் மீது கொண்ட அளவில்லா பக்தியை பற்றி பார்ப்போம். பகவான் ஸ்ரீ தன்வந்திரியாக அவதாரம் புரிந்து அமிர்த கலசத்தை தேவர்களுக்கு அளித்தார் அல்லவா? அவரே மக்கள் நலம் காக்க முதல் மருத்துவராக இருந்து ஆயுர்வேத மருத்துவ முறையை உருவாக்கினார். ஏன் பலருக்கும் கூட கற்றுத்தந்தார். மக்களின் உடல் மற்றும் மன உபாதைகளை ஆயுர்வேதம் மூலம் குணப்படுத்தினார். ரிஷிகளும் முனிவர்களும் யோகிகளும் ஒரு முறை ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணனை காண ஸ்ரீ வைகுண்டம் வந்து அடைந்தனராம். வந்தவர்களுக்கு தன் ஆசீர்வாதங்களை தந்து விவரம் அறிந்தார். அவர்களுக்கு பரந்தாமனிடம் உடலையும் மனதையும் எப்படி கட்டுக்கோப்புடன் வைப்பது என்று வினவினாராம். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணனர் வந்தவர்கள் மீது இரக்கம் கொண்டு தன் பக்தன் ஆதிசேஷன் பதஞ்சலி மகரிஷியாக அவதாரம் புரிந்து உடலையும் மனதையும் கட்டுக்கோப்பில் வைக்கும் யோக சூத்திரத்தை கற்றுக் கொடுப்பார் என அருளினாராம். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணனும் யோக நித்ரையில் ஆதிசேஷன் மேல் உறங்கிக் கொண்டு இருக்க திடீரென பகவானின் உடல் கனம் அதிகமாகி கொண்டே சென்றது. அப்போது ஆதிசேஷனால் கனம் தாங்க முடியாமல், ஏன் மூச்சு கூட விட முடியாமல் போயிற்று. சிறிது நேரம் கழித்து பகவானின் உடல் மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு
வந்ததாம். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணிடம் சற்று முன் நடந்த நிகழ்விற்கு என்ன காரணம் என வினவினார் ஆதிசேஷன். பகவான் பதில் கூறுகிறார், என் இதயத்தில் சிவபெருமான் நாட்டியத்தை ரசித்து கொண்டிருந்தேன். அந்த இன்ப தாண்டவத்தின் ஒவ்வொரு தாளமும் சரி சந்தமும் சரி என் இதயத்தை துடிதுடிக்க வைத்தது. அதனால் உடல் கனம் கூடியது என்றாராம். ஆதிசேஷனும் சிவபெருமானிடம் சிறந்த முறையில் நாட்டியம் கற்று பரந்தாமனை பரவசப்படுத்த வேண்டும் என எண்ணினாராம். பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணனிடம் தன் இச்சையையும் கூறினாராம். பகவான் ஆதிசேஷன் இச்சைக்கு சம்மதிக்கவே ஆதிசேஷன் கொணிகை என்பவளுக்கு மகனாக பிறந்தார். பதஞ்சலி என்ற பெயரும் கொண்டார். பதஞ்சலி சிவபெருமான் மீது கடும் தவம் புரிந்து சிவபெருமானின் நடராஜ ஸ்வரூபத்தில் ஆனந்த தாண்டவம் காணும் வரத்தையும் பெற்றாராம். தில்லையில் நடராஜரின் ஆனந்த தாண்டவத்தை காணும் பேறு பெற்றார். நடராஜர் 108 திவ்ய முத்திரைகளை கண்டு உலகமே சதம்பித்து நின்றது. சிவபெருமானின் கருணையால் பதஞ்சலி மகரிஷி யோக சாஸ்திரம் கூட அறிந்தார். பதஞ்சலி மகரிஷியிடம் பலரும் யோக சாஸ்திரம் அறிய விரும்பினாராம். 1000 மாணவர்கள் சேர்ந்தார். பதஞ்சலி ஆதிசேஷனின் அவதாரமாயிற்றே. தன் மூச்சு காற்று மாணவர்களை தாக்கினால் அவர்கள் இறந்து விடுவார்கள் என அறிந்து தனக்கும் சரி தன் மாணவர்களுக்கும் சரி நடுவில் ஒரு திரை அமைத்து யோக சாஸ்திரங்களை கற்றுத்தந்தார். மாணவர்கள் கேட்ட அனைத்து கேள்விகளுக்கும் தெளிவான பதில்களை கூறி மாணவர்களை பிரமிக்க வைத்தாராம். பாட வகுப்பு முடியும் நிலை வந்தது. அவர் முன்பு நினைத்தது போல ஒரு மாணவன் இயற்கையின் அழைப்புக்காக வெளியே சென்றான். ஆனால் இன்னொரு மாணவன் திரையின் பின் இருப்பது யார் என அறிய விரும்பி அவர் சற்று எதிர்பார்க்காத வேளையில் திரையை விலக்கினானாம். தம் சுயரூபத்தில் பதஞ்சலி ஆதிசேஷன் பாடம் எடுத்து கொண்டு இருந்தார். அவர் மூச்சு காற்று மாணவர்கள் மீது படவே 1000 வெளியே சென்ற ஒருவர் தவிர மற்ற அனைவரும் எரிந்து சாம்பலாகி இறைவனடியே சேர்ந்தாராம். பதஞ்சலி மகரிஷி மிகவும் வருத்தப்பட்டார். வெளியே சென்ற மாணவன் உள்ளே வந்து ஆசிரியரிடம் உத்தரவு வாங்காமல் சென்றதற்கு மன்னிப்பு கூட கேட்டானாம். பதஞ்சலி மகரிஷியும் அவனை மன்னித்து சகல யோக சாஸ்திரங்களையும் கற்றுத்தந்தார். அந்த மாணவன் மற்றவர்களுக்கு குருவாக இருந்து யோக சாஸ்திரங்களை கற்றும் தரும்படி ஆசிர்வதித்தார். ஆதிசேஷன் முனிவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் யோகிகளுக்கும் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற யோக சாஸ்திரம் இயக்கி தம் அவதார நோக்கிகளை பூர்த்தி செய்துவிட்டு பார் கடல் சென்று பரந்தாமனை அடைந்தாராம். பக்தர்களே, பகவான் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் ஸ்ரீ ராம அவதாரத்தில் ஆதிசேஷன் புரிந்த தன்னலமற்ற சேவைகளை பற்றி பார்ப்போம். ஸ்ரீ ராம அவதாரத்தில் ஆதிசேஷன் ஸ்ரீ ராமரின் தம்பி லக்குமணனாக அவதரித்தார் அல்லவா. நகமும் சதையும் போல லக்குமணன் ஸ்ரீராமரை விட்டு ஒரு பொழுதும் விளங்கியதில்லை. லக்குமணன் கண் இமையாமல் ஸ்ரீராமரை காத்து வந்தார். லக்குமணர் ஸ்ரீராமனுக்கு சிறந்த சேவகனாய் என்றும் ஸ்ரீராமர் வழி என் வழி தன் வழி என வாழ்ந்து வந்தாராம். அப்படி விஸ்வாமித்ர மகரிஷி தாடகையை வதம் செய்த ஸ்ரீராமரை அழைக்க லக்குமணன் அழைக்காமலே உடன் வந்தாராம். விஸ்வாமித்ர மகரிஷி நன்கு அறிவார். ஸ்ரீராமர் செல்லும் இடமெல்லாம் லக்குமணன் தன் கண் இமை போல ஸ்ரீராமரை காக்க வருவார் என்று. ஆதிசேஷனாயிற்றே, பகவான் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவை எப்படி பிரிந்து இருப்பார் அல்லவா. ஸ்ரீராமர் யுவராஜா இருக்கிறார் என அறிந்ததும் அளவில்லா மகிழ்ச்சி கொண்டாராம். தன் மரியாதைக்கு கூறிய ஸ்ரீராமரை யுவராஜா ஆக்காமல் 14 வருடம் வனவாசம் செல்ல வேண்டும் என்ற விவரம் அறிந்தவுடன் அடக்க முடியாத கோபத்தினால் இரு விழிகளும் சிவக்க அதற்கு காரணமானவர்களை அழிக்கச் சென்றாராம். ஸ்ரீராமரை வனவாசம் செல்ல சொன்னது தன் தந்தை என்று அறிந்ததும் அவர் கோபம் மேலும் அதிகமானது. தன் தந்தையை அழிக்க முற்பட்ட அண்ணன் ஸ்ரீராமர் மீது இருந்த பக்தியாலும் மரியாதையாலும் கருணை கடல் ஸ்ரீராமர் நல்ல புத்திமதிகள் கூறி அவ்வாறு என்னவாறு தவறு என்று கூறி சாந்தப்படுத்தினாராம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த ராமர் இதோ இந்த கலியுகத்திலே நமக்கு திருவேங்கடத்து எம்பெருமானாக அவதாரம் செய்து தினமும் நித்திய கல்யாண உற்சவத்தில் நமக்கெல்லாம் அருள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். இதோ முதலில் பகவானுக்கு திருக்கரத்திலே அந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பித்தார். பின்பு உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பித்து
அது மட்டும் இல்லாமல் அர்ச்சகர் சுவாமி கூட அவருடைய வலது திருக்கரத்திலே அந்த மந்திரச்ச ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், மதுபார்க்க பூஜை, வஸ்து சமர்ப்பண, மகாசங்கல்பம், கன்னிகாதானத்தை ஓம் யதோன்விந்திரம் சவாஹம் சுத்தம் சுத்தேன் சாம்னாஹ शुद्धैरुक्तैर्वाहारुद्धांशं शुद्धाशीर्वाहान्मुक्तु मयि देवाद्रेणमाजन्ता मय्यासीरस्तमयि देवोतिः देव्यावतारामन्तपूर्वेरिष्टास्यां धनुवास्विराः मक्षीजन्तमयान् हव्यागोतसत्यामनसमयस्तु येन मानियाहं कथमचनाहं विश्वे देवासु अधिवोचता मे उद्धन्यमानमस्यामे ध्यां पाप्मानं भजमानस्यन्तु शिवानस्सन्तु प्रदश्च सन्ना माता पृथिवी तोकसाता पूतः सौम्या कृणध्वं अष्टाबन्धकमृशनापितोहरं येन देवा सौजन्य विक्रियाः सूर्येण ब्रह्मरसाविदं विश्वे देवा सौजन्माञ्जातकृत्रोत्तरं तेजक्रे आस्वाहां जपन्ताः देवेभ्यो ब्रह्मणप्रजानन् आयुप्रजाङ्गमस्मास्ते स्तोतिजनोद्रोणे अयदेन मन्यस्वा नुदेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्म साधुश्रीमत्सरच वेनावः सबुद्ध्यात्मासविष्टासश्चनुमतश्चिवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यमावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुं सोमर्वन्तमास सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं प्रियं सभयं पितृश्रेणं वेदा तस्मै सोममावाहयामि ज्ञानमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यतन्नागसुतेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतामृतलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानचते ओम प्रोक्ष त्वम् अप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यतन्नागसुतेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतामृतलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानञ्चदेहि ओम प्रोक्ष पवित्रेः स्त वैष्णव्येस्त अग्नेः स्त वायुभूतेस्त विष्णुर्मनसाभूतेस्त यज्ञस्य पावनेस्थः परसरस पवित्रेः स्त वैष्णव्यो देवसवितप्रसपनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यस्सरस्वती विष्णवे नमः विष्णोस्तु भोसि दक्षिणता विष्णोस्तु भोसि विष्णोस्तु भोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवातुं इच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यतन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतामित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानचदेहि ओम प्रणय सोमप्रणयतु देवी प्रणयानि यज्ञं सगं साधयन्तनः इदं वदन्ति हि कृतपुष्टावदाः सहस्रपोषं यजमान्यञ्चतेः दक्षप्रणयतो ब्राह्मणे तीर्थेन प्रजातिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मर्तमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपावस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यनावाहयामि अश्विनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवसोमावाहयामि उपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनपां इन्द्राष्टनपां ज्ञेष्ठनपां सोमाष्टनपां ज्ञेष्ठनपामि सोमाष्टनपाग्नि सोमाहाभ्याञ्जष्टनपामि प्रजापतिष्ठनपां ब्रह्मणेष्ठनपां इन्द्राष्टनपां सुभ्याष्टनपां मरुद्भ्याष्टनपां रुद्रेभ्योष्टनपामि अवोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुवेष्टनपां मित्राष्टनपां वरुणाष्टनपां आदित्यभ्योष्टनपामि अश्वभ्याण्डष्टनपां पूष्णेष्टनपां कक्षाष्टनपां कक्षसोमाष्टनपामि औपासनयज्ञाष्टनपां यज्ञादिश्वेभ्यो देवेभ्योष्टनपामि आज्यं त्रिपतिश्रयामि चरन् त्रिपतिश्रयामि अग्ने ज्योतिरसमिति स्वाहा अमृतं स्वारणमसि अन्तर्दमक्षान्तर्धारादयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारादयः चिक्पतिस्वाम्नात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्पतिस्वाम्नात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा देवस्त्वा सविताम्नात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा शतंच सहस्रं यद्भदंच समुद्राष्टमपराध अवरप्रसेन्मा पंक्तिरासेन्मा सर्पनेन्मा वैश्वानरान्मा अग्निपुरुषान्मा अयतेन मन्यस्वान् उदेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसप्रसवा षष्टि सहस्राः नितमक्षमर्भरमाणया अयन्ति यद्मा आत्मा जातवेदस्तेने दुःसवतेजस्मान् प्रजापशुब्रह्मोत्तेन अन्नाद्येन
आदस्व वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नित्यादेशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शिवाय स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा अक्षय सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा अग्निदिशेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिहार्य ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा तेन मकस्ताः हनुमतेन मकस्ताः स्वस्तेन मकस्ताः देशविदप्रासावीः ओम भूः अतिभ्रज्ञष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आधार होमान्ते सर्वमन्त्रपर्यातरणात् प्रास्थातं मतो देवादिवैष्णवं होष्यैतेन मनिस्वानुमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवतप्पस्वा ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तदां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवदं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः तदोधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि प्रस्देतोः वृतानुस्येन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसंसूर्यः दिव्यवचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यमो जार्ध्रवां दृश्यन्ते विष्णोदित्परं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा एतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः प्रासावीः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశాడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా చంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశాడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా मोदः प्रमोद आनन्दः मुष्कयोर्नुतस्वः प्रत्यैव काम्य सतृप्यानि दक्षिणानां प्रतिगृहे घृणाहि घृतवती सवितराधिपत्यै पयस्तुतेनन्दिराशानोऽस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्निहोरास्येषानासादो यामुनोता बृहस्पतिर्मातरिस्रोतवायुस्सन्धवाना वाता दिनोग्नन्तु इष्टम्बो दिवो वरुणः पृथिव्या अस्येषानां जगतो विष्णुपत्नी श्रौतस्मार्तादिकं कर्मणि खलं मेणसूत्रदं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः ऋतुस्मृतिनिधि पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्यतकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य
అచింత్యా పరమశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమహద వ్యక్తాక్ష సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారహిక్త శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగురోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమని రక్షావతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్ర ఆగ్నేయవనిరుదివర్ణ వాయుకుబేరేషాణాఖ్యాష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలయితే లవణేక్షుసురా సర్పితి క్షీరశుద్ధోదగాఖ్య సప్తార్ణవపరివృతే జంబూ ప్లక్షక్కుచక్రవంచస్సాగసాన్మళి పుష్కరాగాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీరావృతభద్రాశ్వకేతు కమాలకరవణక గురువర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏ దక్షిణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్ధికేషు రాజప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామా సంఘాతవ కాళసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిరైశ్వరమండపర్యంతం కృతరాశీర్వర్షాస్త్రావసానైకైకితరాపకర్షక్రమేణ సర్వరాశ్వపకర సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమద్రాప్తాప్తోర్యామశాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫల సిద్ధార్థం పరవ్యూహమంతర్యామ్యర్చావతార స్వరూపరోపణమైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవశిష్టాదివిత్తగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రే ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాది ఉత్పత్తి స్థితిలే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట ముకుట మణిగణ విజృంభిత పాదార విందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శరవణ పుత్రాయ ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటాహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్యయౌవన స్వభావలావణ్య తేజోరత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకరరాసు జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్చవనాప్నువానాౌర్వైదల పంచార్షే ప్రరాణిత భార్గవసగోత్రోద్భవీం
సర్వాలంకారవతీం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసనీం అనంతగుణాత్మికాం భృగో సంకల్పతనయాం భార్గవీం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యారాసు జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం రుణీద్వమే దాస్యామి. ఋగ్యజుస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యవావత్సార నైధ్రువత్రయార్షే ప్రరాణిత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం స్వరాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం కాశ్యపీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసు జాతాయాం శ్రీ భూదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణేరుతాం దాస్యాం విష్ణువే తుభ్యం బ్రహ్మలోకం జిగీర్ష్య సాలంకృతాం మాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రేతోహం ప్రేక్షామి సర్వకామ్యార్థసిద్ధయే. విశ్వంభరా విశ్వరూపా సాద్గుణ్య సర్వదేవతాః ఇవాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః. కన్యాదానముహూర్తోऽస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోऽస్తు.
सौभाग्यमत्वै तत्त्वायाधास्तं विपरेतनाम् श्रिये जातश्रिय आनिर्याय श्रियम्बयोचरद्रिभ्यो ददाति श्रियम्बसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रामि शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु प्रजापतिस्तमुखं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागं समेधवस्यत सौभाग्यमत्वै दत्तायाधास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यात् सुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతింది కలికి జవన పుయాగము సేనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతింది కలికి జవన పుయాగము సేనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతింది కలికి జవన పుయాగము సేనతడు स्वाहा इमामग्निस्त्रायतांगारवत्य प्रजामुच्युतमुत्तभाषात् तदेकं राजावरणो मन्यतां धेगुस्त्रीपौत्रमहन्नरोधात् स्वाहा इमं मे वर्णस्य देहमुद्वाचमुड्या त्वां वत्सराचके स्वाहा तत्त्वाजा ब्रह्मणा वन्दमानस्ताशाः सेजमानोभिर्भिः अहेडमानवर्णे हवोदर्शिं समानाय प्रमोषि स्वाहा त्वन्नाग्नेवर्णस्य विद्वान् देवसेडवयाश्रेष्ठाः यजुष्ठावन्यतमस्सोषिडानो विश्वाद्वेषागं सुप्रमुत्य स्वाहा तत्तन्नाग्नेमो भवति नेदुस्यास्याब्सव्यष्टौ अभयक्षुणवर्णगम्राणो विहिमृडिं सुहोनेधि स्वाहा
तमग्ने अयास्यासन्मनसा इदः अयासन् हव्यमूषेयानो देहि वे जग्गु स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूतिवृत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवास स्वर्ण वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा इमां लाजान्ति आज्यमविगार्याम् इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमुन्यतां यन्नारिव ब्रूदेऽग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेवतिरेदन्तः ज्ञातयो स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहिदेनागमृधेनोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तयाभ्यं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमुन्यतां यन्नार्यब्रूदेऽग्नौ लाजानावन्ति ज्ञातयो स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहिदेनागमृधेनोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तयाभ्यं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमुन्यतां यन्नार्यब्रूदेऽग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहिदेनागमृधेनोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तयाभ्यं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा तेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः द्विवृत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः सरप्रायश्चार्थमुतो देवादिवैष्णवं भोष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवतपस्वा ओम मतो देवाः मन्त्रदौष्णकर्मे पृथिव्याः सुतां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवदं समोढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाः अभ्यादधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतः पदानि पश्येन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवीवचक्षादग् स्वाहा तद्यप्रासपण्यवोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्रं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूतिवृत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः कर्मसाफलसिद्धं परिष्ठातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा यदस्य कर्मणोत्तिरितमिद्यानेन महाकरम् अग्निष्कर्षस्ततं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वताहुतातेनां कामानागसमत्रित्र्ये स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनमदे स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमश्रे स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा इन्मात्मनम् इन्द्रावोदग्निस्तत्पुनराः जातवेदापचर्षे स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात्मनिन्द्र बृहस्पतिः पुनन्मेश्वराजं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशिष्ठेभ्य स्वाहा भेषुन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं षट्कुलमतिनोक्तञ्चैग्ने अतिरिक्तं कर्मण क्षेनमग्नः पर्वाणि प्रज्ञेतकल्पयन् स्वाहा देवान् स्वाहा यथो शशिधीमहि स्वाहा समिधस्तेजस्तेजमेधे स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तः सप्त सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयोनि रावण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिर्भुक्तं औषधर्वाशिष्यभुक्तं अग्निजीर्णं वेदजीर्णं द्योर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधि वनस्पतिगन्धर्वा सरश्चैर्जीर्णं स्वाहा समन्तां हर्षावतेन समादित्यै वसुभिः समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्नि समिध सप्तैः सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्द्रिय सप्तयोनि रावण स्वागतेन स्वाहा
अग्निस्त्रिप्यदो वेदस्त्रिप्यदो देवस्त्रिप्यदो पृथ्वीस्त्रिप्यदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वशुन्दर्वासे त्रिप्यन्तां वेदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्तु त्रिप्यन्तां ऐतेनम ग्रस्ता सस्तेम ग्रस्ता देव प्रासाभिः पवित्र से पवित्र में भूयासा में भूयासा ससन में भूयासा दक्षिणतः परदेवनया पश्चिमतः परदेवनया दक्षिणतः विष्णु सनमसि प्राच्यां विष्णु सनमसि सर्वान् अन्यान् समूह्यां ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्याम् आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्त्वामा भवोषदेवमृदां वृषदेश्च दिवं गच्छततनुरष्टमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्धूतिः आदित्यस्तमो नमः त्र्यायुषं जमदग्निः तत्सवत्सत्र्यायुषं तद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्षशे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामय भोस्थानमूर्जेदादना महेरणाय चक्षे योगस्वदमार्दस्तभाजेतेन उषतीर्वमात्रः तस्माहरङ्गमापोः सक्ष्याय जन्मधा आपो जनेधा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वे भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्विनाहं वर्चस्वे भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्विनाहं हरस्वे भूयासं मयि मेधां मयि प्रियां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि सूर्योभ्राजो दातु जोक्षसूर्यन्दृशे यवदगान्मतोर्नवाः द्युभ्राजमानसरसमध्या समाभ्रवरो दाक्षसूर्यो पश्चिमसारनातु जातवे से भगवान पज्जलते वो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्ञो भारं निवेदयामि गुरो भारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं वगच्छ सर्वं श्री भूनीलासमेत श्रीनिवासार्पणमस्तु।
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।